Every lease analysis follows these standard steps. Uh, Number one, first we have to make a decision that we have to make a certain investment or not, we need a certain machine or not, we need a certain building or not. This is not a leasing decision because making a long-term investment is capital budgeting decision. So don't confuse it with the leasing. आपका जो ये डिसीजन होता है कि आप किसी भी मशीन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी भी बिल्डिंग की इन्वेस्टमेंट की आपको ज़रूरत है, ये आपका कैपिटल बजटिंग का डिसीजन है। उसके बाद कैपिटल बजटिंग के बाद क्या आता है? जब आपने कैपिटल बजटिंग का डिसीजन कर लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने जो डिसीजन किया है कि आपने सर्टन बिल्डिंग खरीदनी है, आप उस बिल्डिंग को कैसे फाइनेंस करेंगे? आप कैश के ज़रिए फाइनेंस करेंगे, इफ़ यू हैव अनफ कैश। आप डेट के ज़रिए फाइनेंस करेंगे, आप बैंक के पास चले जाएंगे, वो आपको लोन देगा, उस लोन से आप वो मशीन परचेज कर लेंगे, या फिर आप कोई शेयर्स इशू कर लेंगे। शेयर्स इशू करके जो उससे मनी कलेक्ट होगी उससे आप वो मशीन खरीद लेंगे। ठीक है, ये क्या है? ये हमारा फाइनेंसिंग का डिसीजन है। फर्स्ट कैपिटल बजटिंग, देन फाइनेंसिंग, और उसके बाद हमारा उसको परचेज करने या लीज करने का डिसीजन आ जाता है। वेदर वी हैव टू परचेज इट और लीज। ये डिसाइड करने के लिए कि हमें परचेज करना है या लीज करना है, हमें सारी सिचुएशन का एनालिसिस करना पड़ेगा कि अगर हम इसको परचेज करते हैं तो हमें कितनी कॉस्ट होगी और क्या बेनिफिट्स होंगे, और अगर हम इस इक्विपमेंट को लीज कर लेते हैं तो उससे के अगेंस्ट हमें क्या कॉस्ट देनी पड़ेगी। ठीक है, फोर्थ स्टेप में क्या है कि लीज जो है इसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इट्स कंपेरेबल टू लोन। कैसे? आप लोन लेते हैं, उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट पे करते हैं। सिमिलरली जब हम लीज करते हैं किसी इक्विपमेंट को, उसका कुछ रेंट पे करते हैं। इंटरेस्ट एंड रेंट आर सिमिलर because you have to pay a fixed amount every period। और उसके बाद क्या है? You don't have ownership। जब आपकी टर्म एक्सपायर हो जाती है तो आपने प्रिंसिपल जो है उसको रिटर्न कर देना होता है। सिमिलरली लीज में भी यूजुअली जो स्टैंडर्ड केस है उसमें कोई ऑनरशिप नहीं होती। जब आपका कॉन्ट्रैक्ट ओवर हो गया तो आप उस लीज को या उस एसेट को वापस कर देंगे। सिमिलरली अगर आप ने लोन लिया हुआ है, कोई डेट लिया हुआ है और आप उसका इंटरेस्ट नहीं पे कर सकते तो कंपनी क्या होती है? बैंकरप्सी डिक्लेयर कर देती है। लीज में भी यही होता है कि अगर आप उसका पीरियोडिक रेंट जो है वो पे नहीं कर सकते तो आप बैंकरप्ट हो जाते हैं। ठीक है, दोनों सूरतें सेम है। लिहाजा क्योंकि लीज और टेकिंग अ लोन आर सेम थिंग, सिमिलर थिंग नॉट सेम, तो इस सूरत में क्या होगा? जब हम लीज का एनालिसिस करेंगे फॉर लेसी तो हम ये एनालिसिस करेंगे कि लोन लेके उस प्रॉपर्टी को अगर परचेज कर लिया जाए, लोन एंड परचेज, या उसको लीज कर लिया जाए, दोनों सूरतों में जो कॉस्ट है, यहाँ पे जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट होती है और कॉस्ट ऑफ लीजिंग जो होती है, दोनों की कॉस्ट को कंपेयर करेंगे। जिसकी कॉस्ट लो होगी वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा।
Simple. हाँ जी, इसको रीड कर लीजिएगा, सिर्फ एग्जांपल। चलें, अब हम आते हैं अपने फॉर्मल एनालिसिस के ऊपर। इसमें क्या स्टेप होंगे? फर्स्ट स्टेप क्या है? वी नीड टू एस्टिमेट द कैश फ्लोस associated with borrowing and buying the asset। अब बोरो करेंगे, कोई इंटरेस्ट पेमेंट करेंगे, इंटरेस्ट इसके अलावा जो बोरोड अमाउंट है वो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में चली जाएगी, क्योंकि आपने इंटरेस्ट पेमेंट करनी है। तो बोरोइंग की वजह से आपको कुछ टैक्स के बेनिफिट होंगे, वो पॉजिटिव कैश फ्लो होगा। हम कैपिटल स्ट्रक्चर के चैप्टर में ये चीज़ें देख चुके हैं। ये सारी जितनी भी कॉस्ट हैं उन सबको हमने रिकॉर्ड करना है। सेकंड में क्या है, अगर हम लीज कर लेते हैं तो उस केस में क्या क्या कॉस्ट होंगी, क्या क्या हमारी जो है बेनिफिट्स होंगे, वो सारा कुछ हमने रिकॉर्ड कर लिया। और थर्ड में हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप पे हमने इन दोनों मेथड्स को कंपेयर करना है और ये एनालाइज करना है कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा बेनिफिशियल है, उसको चूज़ कर लेना। सिंपल। फर्स्ट, estimate the cash flows associated with borrowing and buying the asset. Second, estimate the cash flows associated with leasing the asset. Third, compare both of these. So our formula for net advantage from lease is present value of leasing minus present value of purchasing the asset. If it is positive, then lease. If it is negative, then buy the asset. So here is our case. Number one, to analyze the lease. There is a company called TGC which needs a 2-year asset that cost 100 million, and the company must choose between leasing and buying. So we have two options, whether to lease or buy. TG's tax rate is 40%. If the asset is purchased, the bank would lend 100 million at a rate of 10% on a 2-year simple interest loan. Thus, the firm would have to pay the bank 10 million in interest at the end of each year and return the 100 million of principal at the end of the year 2. However, the interest expense is deductible, so the tax shelter is T tax rate and multiply it with the interest expense. We have seen this formula in capital structure chapter, right? So the benefit is in the tax is 4 million. TGC could depreciate the asset over 2 years for the tax purposes by the straight line method if it is purchased, resulting in the tax depreciation of 50 million and tax saving of 20 million in each year. And the asset's value at the end of 2 years will be 0. The whole asset will depreciate. On the other hand, TGC could lease the asset under a guideline lease for 2 years for a payment of 55 million at the end of each year. These payments are also tax deductible, so how much we can take benefit from the lease is tax multiply with these payments. You will have
0.4 multiply 55 million. So on annually you will have a tax benefit of 22 million from leasing the equipment. So here are all the information of borrowing from a bank and then buying the assets. And down here are the information for release. So we have to estimate the overall cost of borrowing and buying, and then overall cost of leasing. Then we have to compare both of these costs. Whichever cost is lower, we will take that proposal. So these are the information written in an organized form. So we want to have an equipment whose life is 2 years. Cost of that equipment is 100 million. If we take a loan of 100 million from a bank, we have to pay an interest of 10%. The tax shield from that interest will be 4 million, and tax saving from depreciation is 20 million each year. Asset value at the end of 2 years will be 0. Lease, if we take this asset on a lease, then we have to pay 55 million at the end of each year, and tax shelter from these payments will be 22 million. We have calculated this. So from this information, we know that the asset life is 3 years. So here we are today, asset life is 2 years. And this is year 1 and this is year 2. So we have to see in a first case, like we want to borrow and then buy the asset. To borrow an amount from a bank, today we will have 100 million, right? And then we will buy the equipment in 100 million. So this is outflow from us. This is the money we got from बैंक हमारे जो है कैश में ऐड हो जाएगा, लेकिन जो ही हम इक्विपमेंट को परचेज करेंगे तो ये हमारे पास से चला जाएगा। लोन और इक्विपमेंट के केस में हमारे पास कोई भी कैश फ्लो नहीं है ईयर 1 और ईयर 2 के अंदर, ठीक हो गया। अब क्योंकि हमने लोन लिया है तो लिहाजा हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट की पेमेंट करना पड़ेगी। इंटरेस्ट कितना है? 10% है ऑफ 100 मिलियन। तो 10% जब कैलकुलेट करेंगे 10 मिलियन ईयर 1 में हो जाएगा और 10 मिलियन ही हमें ईयर 2 में पे करना पड़ेगा। क्योंकि हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो हमने कैपिटल स्ट्रक्चर के चैप्टर में देखा है कि फर्म्स डेट इसलिए लेती हैं क्योंकि इससे टैक्स में बेनिफिट होता है, और टैक्स में कितना बेनिफिट होता है वो हम टैक्स शील्ड के ज़रिए कैलकुलेट कर सकते हैं। सो टैक्स सेविंग हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके लिखा हुआ कितनी है? 4 मिलियन है। तो ये क्योंकि हम सेव कर रहे हैं लिहाजा ये हमारे एसेट्स में ऐड हो जाएगा। 4 मिलियन का टैक्स बेनिफिट हमारे पास ऐड हो गया। उसके बाद हम कुछ सेविंग कर रहे हैं टैक्स के अंदर ड्यू टू डेप्रिसिएशन। दिस इज ड्यू टू डेट एंड दिस इज ड्यू टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की वजह से हमारी कितनी सेविंग है?
20 million in each year. ये भी क्योंकि हमारा इनफ्लो है, वी आर सेविंग दिस मनी, दिस विल एड अप इन आवर revenues, cash flows. Okay, that's it. These are the all cash flows we could have from this kind of asset. इनको हम जमा कर लेते हैं हर साल में. Okay. Right here. So this will add up to 0. Oh, one more thing left. We have to return the principal, which is $100 million. What about this one? 24 minus 10, 14, and similarly 24 and minus 110 will be minus 86. Then, second, cost of leasing. If we lease this equipment, then we will not get any cash. We don't have to pay any cash at year 0, so this will be 0. But we have to pay the annual rents. How much is annual rent? It is 55 million each year. 55 million minus 55 million. Then from these payments, we will get some tax benefit, which will be 22 million each year. Simple tax shield, 22 million. That's it. We don't have any other cash flows from leasing, so just add all of these and we will get 22 minus 55, 33. 22 minus 55, 33. So these are the cash flows. Let's get back to our slides. So here we have estimated the cash flows associated with borrowing and buying an asset. We have also estimated the cash flows from leasing, but we need present value of leasing and present value of owning or buying. So our next step is to get the present values of these cash flows. We know the formula for present value is cash flow over 1 plus R per n. We can see the cash flow here, 16, 14 and 86, 33 and 33. We know the n, 1 for this one and 2 for this one, similarly 1 for this one and 2 for this one. What about the r? That is the problem. We don't know the r. So how we will be able to get the r is by using this. So we know that we have to pay 10% interest rate on debt. We are comparing it only with the debt, therefore we need
cost of debt only, but this is before tax, so we need to calculate the after tax cost of debt. So our tax rate is 40%, we'll deduct it from 1 and we will have our after tax cost of debt 6%. So this is our cost of debt. We will use this discount rate to get the present values of these cash flows. So if we use present values formulas for each of these cash flows and add them, we will get minus 63.33, and for leasing we will get minus 60.50. What was our formula for lease? Net advantage from lease is present value of leasing minus present value of owing. What is present value of leasing? Minus 60.50, and what is present value of owing is minus 63.33. From here we can see if we lease we have to pay $60.50, but if we buy we have to pay 63.33. So overall we have to pay more in the case of buying an asset, and we have to pay less in the case of leasing the asset. And what is our net advantage? $2.83. Therefore, it is suggested to lease in this case because lease is giving us some benefit, which is 2.83.